everyone, so let's move towards our today's topic, which is, so what is sleep? If I defined what is sleep? So sleep is basically unconscious state of the body from which person can be awakened. Okay, but if there is if we talk about coma, so in coma person cannot be awakened. So this is very much important. You have to remember that what is difference between sleep and coma. So sleep में इंसान अगर सो रहा है तो उसको उठाएंगे तो वो उठ सकता है, लेकिन अगर आप बात करें उसकी कॉमा की, तो कॉमा में जो पर्सन है जो कॉमा में है वो वापस नहीं उठ सकता, उसको उठाया नहीं जा सकता आवाज़ देकर या पानी मार कर. ठीक है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप्स which you have to remember as well. These are most important topic. Rapid eye movement sleep, in other words REM sleep, deep sleep, that is second type is deep sleep or non-REM movement. First we will talk about REM sleep, rapid eye movement sleep. As the name indicate, in this sleep there will be eye movement. Now eyes undergo rapid eye movement and it is not so restful. Why? Actually होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोने गए, ठीक है, आप पहले सोए तो सबसे पहले जो आपको नींद आएगी वो ज़्यादातर डीप स्लीप होती है फॉर 1 आवर. देन आफ्टर 1 आवर जो स्लीप होती है वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है, आइज़ मूव कर रही होती हैं, ड्रीम्स यानी ख्वाब आपको नज़र आते हैं, और वो ख्वाब आप जब उठ जाते हो, सो कर उठते हो तो आपको याद रहता है हाँ मुझे आज ख्वाब में ये आया था. दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. ओके, एंड इट इज़ नॉट सो रेस्टफुल. और फॉर एग्ज़ाम्पल संडे का दिन है, आपने कोई ज़्यादा काम काज नहीं किया, कोई टेंशन नहीं ली, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भाग दौड़, कोई फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह नहीं हुई, पूरा दिन घर पे बैठे रहे. अब जब आप रात को सोगे तो आपको कौन सी नींद आएगी, रैम स्लीप आएगी. ठीक है, जिसमें ड्रीम भी आएंगे, ख्वाब भी आएगा. यूजुअली इट स्टार्ट्स आफ्टर 1 आवर ऑफ द डीप स्लीप एंड इन दिस स्लीप मसल्स ऑफ द बॉडी आर एक्टिव, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट आर इरेगुलर, and the brain metabolism is increased to 20%. Okay, and in this sleep brain will be active. Okay, remember this point as well. Now moving towards further, what is that is deep sleep. Okay, non-REM sleep. Non-REM sleep is also known as deep sleep or slow wave movement sleep. Okay, it occurs in the beginning of the sleep, like I said, and it is so restful. For example, if you are sleeping for 8 hours, in the beginning for 1 hour deep sleep will occur, and then slowly and gradually you will enter into the REM sleep. Okay, in this sleep, that is deep sleep, there will be decrease of blood pressure, respiratory rate, heart rate, and metabolic rate as well. In this sleep, dreamless, it is called as dreamless sleep. Why? Because there will be no dreams in this sleep. आपको कोई ख्वाब नज़र नहीं आता इस स्लीप में. नाउ स्लीप के कॉजेज़ क्या हैं, या अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स ऑफ द स्लीप, अगर हम अदर फीचर्स की बात करें कौन कौन से फीचर्स हैं. लाइक आई सेड दैट सेरोटोनिन, as for serotonin, as for sleep, so serotonin is the hormone which is causing sleep, which will cause sleep. Another cause of sleep is acetylcholine. They can also cause, because when there will be injection of when we take the drug which will mimic the acetylcholine, so which will mimic like acetylcholine, so what happen, आपको नींद आना शुरू हो जाती है. तो एसिटाइलकोलिन की तरह जो एक्ट करते हैं ड्रग, जो मेडिसिन एसिटाइलकोलिन का फंक्शन एक्ट करती हैं, उनमें आपको नींद आती है. फिर एक और न्यूरॉन होते हैं हाइपोथैलेमस में जिसको कहते हैं ऑरेक्सिन न्यूरॉन. व्हाट हैपन, ऑरेक्सिन न्यूरॉन अगर ज़्यादा हैं तो वो ऑरेक्सिन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से आपको
जो नींद है वो नहीं आती। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरिजिन न्यूरॉन है तो ऑरिजिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर ऑरिजिन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको नींद आ जाएगी। ठीक है। नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस इज मरमाइल पेप्टाइड। इट इज़ अ लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड एंड it is found in CSF and urine. If a person is not if a person is awake for many days, like several days, 2 or 3 days, वो सोया ही नहीं है 2 से 3 दिन तक, तो फिर क्या होगा, उसके CSF में और यूरिन में एक सब्सटेंस पाया जाएगा जिसे कहते हैं मरमाइल पेप्टाइड। एंड दिस सब्सटेंस is, if this substance is injected in our body, what happen, it will cause rapid sleep। मतलब एकदम से बंदा जो है ना, या जो भी पर्सन है, अगर उसको आपने मरमाइल पेप्टाइड दे दिया तो वो उसी वक्त सो जाता है, उसी वक्त उस पर नींद तारी हो जाती है। सो दिस वॉज द होल टॉपिक। टेक केयर, गुड लक, वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय, थैंक यू सो मच।